Hello students and friends, you are studying UPSC Mathematics. Today's topic is Fourier transform. Before starts this topic, like the channel, subscribe and share it. Fourier transform. First of all, Fourier series is that ये Fourier series f(x) equals to half a naught plus sigma n equals to 1 to infinity into of a n cos n pi x upon L plus b n sin n pi x upon L, where a n equals to 1 upon n integration minus L to L f(x) cos n pi x upon L and b n equals to 1 upon L integration limit goes to minus L to plus L f(x) sin n pi x upon L. Fourier transform. और Fourier complex transform denoted by f(x) और fp 1 upon root 2 pi minus infinity to plus infinity e to the power I px fx dx. Inversion formula. f(x) equals to 1 upon root 2 pi minus infinity to plus infinity e to the power minus I px Fourier transform p dp. Fourier sine transform. F root 2 upon pi 0 to infinity fx sin px dx. Inversion formula. f(x) equals to root 2 upon pi 0 to infinity fp fsp Fourier sin p sin px dp and Fourier cosine transform. Fourier cosine transform. fcp root 2 upon pi 0 to infinity fx cos px dx. Inversion formula. For cosine transform fx equals to root 2 upon pi 0 to infinity Fourier cosine p cos px dp. तो स्टूडेंट्स ये मेन फॉर्मूले हैं Fourier ट्रांसफॉर्म के. इसके बाद अब क्वेश्चन बताते हैं आपको. Find Fourier transform of fx defined by
1 0 hence absolute a minus infinity to plus infinity sin pa cos px upon p dp b 0 to infinity sin p upon p dp Fourier transform root 2 pi IPX fx dx Fourier transform 1 upon root 2 pi minus a to plus a e to the power IPX dx 1 upon root 2 pi e to the power IPX upon IP limit goes to minus a to plus a 1 upon root 2 pi e to the power IPA minus IPA upon upon IP FP टू पाई sin AP upon P inversion formula of Fourier transform वहाँ पर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी FP 2 upon root 2 pi वन जीरो mod x लेसन है 1 upon pi cos px I sin px sin AP upon P dP equals to 1 0 separating cos px sin AP upon P dP I sin px sin AP upon P dP equals to pi that is even odd ये फंक्शन इवन है स्टूडेंट्स और ये नेक्स्ट वाला सेकंड वाला ओड है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू पी करें तो लिमिट ये पी के लिए है पी के प्लस हम माइनस पी रखेंगे ना पुट करेंगे तो फंक्शन रिमेन अनचेंज एंड सेकंड चेंज सो वी कैन से फर्स्ट इज इवन सेकंड इज ओड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस पी एक्स साइन ए पी अपॉन पी डी पी इक्वल्स टू पाई फर्स्ट फोर सेकेंड ए इक्वल्स टू 1 एक्स टेंस टू 0 दैट इज इवन 0 to infinity cos px sin AP dP equals to pi और पुटिंग x equals to 0 a equals to 1 0 to infinity cos 0 1
sin p upon p dp इक्वल्स टू पाई बाई 2। स्टूडेंट्स एक बार समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। इसमें ये लिमिट्स mod x लेस देन a मीन्स लिमिट गोज टू माइनस ए टू प्लस ए एंड फंक्शन इज 1 इंटीग्रेटिंग वैल्यू ऑफ e टू द पावर I sin p a माइनस e टू द पावर I sin p a e to the power I p a minus e to the power I p a equals to 2 I sin p a and solving, that is Fourier transform, and that is the inversion formula for Fourier transform, putting the value of f p and that is f x e to the power minus I p x cos p x minus I sin p x, separating first even second odd, that is 0, and that is the first solution. Minus infinity to plus infinity cos p x sin a p upon p dp equals to pi 4 second, that is even function, limit goes to 0 to infinity multiply by 2 and putting x equals to 0 a equals to 1, that is the second solution. Integration 0 to infinity sin p upon p dp equals to pi by 2. Next question.